Did we start the session? कैसे किया था? Basically, we did the chapter 17 Adhyay, and we talked about Yeah. if there is creation, there is a creator. हाँ, हमने पूरी क्रिएशन की बात करी, क्रिएटर की बात करी. पहले हमने क्रिएशन से शुरू करी बात की, you know how incredible creation is, beautiful it is, powerful it is, and then we spoke about that if creation is so beautiful, so incredible, so powerful, then there must be some person who must have designed it also, no? अगर intelligent design है, तो intelligent designer must be होगा. Yes or no? You remember this? Yeah. तो उन सब की बात करके हमने we spoke about how nature should actually when we see nature it should remind us of the creator. Creation को देख के हमें creator की याद आनी चाहिए. That's how we can see God everywhere all the time. And we gave a small exercise also. Do you remember the small exercise? That कुछ आपको beautiful दिखेगा तो आपको याद करना है कि oh this beautiful flower is so beautiful. How beautiful the creator must be. We had this exercise. भूल गए ना? You forgot, no? Just ये this दरवाजा, Mataji, something in this दरवाजा. As soon as someone passes over to that side, people just सफा चट हो जाता है पूरा. आप try and see some other route today. Maybe you can go out from, or maybe you can remember. So today I thought we will talk a little bit about learning. ठीक है, learning. School की छुट्टी चल रही है अभी. Is school out right now? Yeah. Yeah, schools are out. Yeah, schools are out. Holidays, vacations. Yes, holidays have started. Yeah. Okay. For you also. What did we? So what do you do? Do you enjoy school or do you enjoy vacations? Both you enjoy. Why do you enjoy school? I enjoyed school too. Meet people. What else? Fun study. That's a line. Please. Your father sitting here. Oh. Uh, but like you'll enjoy learning. You enjoy learning. You okay? Why do you enjoy learning? What do you enjoy about learning? क्या अच्छा लगता है? नई चीजें सीखने में क्यों अच्छा लगता है? क्या हाउ डू यू ठीक है अच्छा क्या लगता है वो छोड़ दो. कैसे आप हाउ डू यू लर्न न्यू थिंग्स? व्हाट इज द टीचिंग मेथोडोलॉजी? जो आप स्कूल में कैसे सीखते हैं चीजें? आजकल तो everything is available on the web, no? You can just Google everything. How to do 1+1, how to do calculus, how to do geometry, everything you can learn. By trying, yeah. But why do you have to go to school to learn? I'm not giving you ideas, don't drop out of school. But I'm just asking. Experiential learning. Yeah, you have experience. Is that what you have kids going to school, bro? Yeah, I have a kid. Yeah, that's how they sold the fees to you. हम आपके बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं, होलिस्टिक लर्निंग नहीं. I work in the space of education and skilling, so I know how things work. So, why do you go to school to learn? As he said, experiential learning. क्या experience होता है वहाँ पे? Different क्या है जिससे आपको सीखने को मिलता है? This can be like Chaitanya Priya is here. She's homeschooled also. She also has a teacher, right? Either you homeschool or you go to school, you have a teacher, right? Why do you need a teacher to teach? Why do you need a teacher to teach? No, more subjects or more about the subject also, right? Yes or no? Someone who knows more, you can learn from that person. Just information might not really help. Someone who knows the nitty gritties of it, पूरा conceptually आपको बता सके, understand कर सके आपके level पे आके, that person is needed. Yes or no? Yeah. Otherwise, what you can do is there's many ways of learning वैसे तो. जैसे कि अगर आपको छोड़ दिया जाए दुनिया में, like you just let someone just lets you go in the world and just says learn things. So can you still learn things? You can still learn things. You can still learn things. You can just आप देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, कैसे बन रही है?
Have you seen construction here? Gurgaon, इतने सारे यहाँ पे, attractions हैं. All of them are construction attractions. We have so many construction going on all the time. I've been here since 2004. Construction, perpetual construction going on here. 20 years it's been. So, have you seen construction happening? Yeah. Can you see the construction happening and learn how to make a building? Can you do that? Why? Arey, it's happening right in front of you. Why can't you learn? It is possible. Possible है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें. It is too much time, no? You will learn, you will see, you will guess. There's a lot of guess happening, yes or no? Because you will see, for example, how many of you know how cement becomes actual RCC? Cement is मिट्टी type होता है ना? Have you seen cement? Have you seen cement? How cement look like? In a bag it comes. How does it look like? Gray, very nice. A gray color mitti looks like, right? How does that mitti become this strong wall? How does it become this strong wall? हाँ, मिक्सिंग विथ वाटर हमने ये देखा है, मिक्स करते हैं वाटर के साथ कुछ करते हैं ऐसा ऐसा. तो अगर हम ऐसा गेस करें, ये करें, वो करें, तो वी कैन ऑल्सो हिट एंड ट्राई करके वी कैन लर्न समथिंग. बट विल दैट बी परफेक्ट लर्निंग? मे बी नॉट. यू डोंट नो. 100% श्योर नहीं हो सकते. But if you go to the cement wala person and say, sir or madam, I want to sit with you and understand how this cement works. Can you teach me? Will that be certain knowledge then? Will that be certain knowledge? So, how can that be certain? Because that person knows. Yeah? Yeah, you have a thought? Okay. That person knows, and that person tells you. Just like that, learning has many ways to learn. For example, material world में जो हम सीखते हैं, there is inductive learning also, deductive learning also. Inductive का मतलब क्या होता है और deductive का मतलब क्या होता है? To make it simple, कि या तो हम experiment करके सीखते हैं या कोई हमें बताता है कि क्या करना है उसको सीखते हैं. इसका combination होता है. कोई फॉर एग्जाम्पल हमें बताता है कि सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, किसी ना किसी ने हमें बताया है. यस और नो? राइट? समवन्स टॉट अस. हमने उसको सुना, फॉलो किया, लेकिन फॉलो करने के बाद एक्सपीरियंस से हमने भी कुछ उसमें ट्वीक्स करी, प्लस माइनस करा. यस और नो? हमारे अपने एक्सपीरियंस से वी डिड समथिंग. डू यू एग्री हियर? Yeah. So it's a combination of both. That's the material world. So there are three ways to learn something in this material world. I will tell you the big Sanskrit words for it first, and then हम उसका simple जो simple terms है वो learn करेंगे. But आज हम ये सीख के जाएंगे कि सीखने के कैसे कैसे तरीके होते हैं. Is that okay? Interested in this? Are you interested? Yeah. Aisha, you're okay? Okay. So there are three ways to learn. First is called Pratyaksha Praman. What is it called? प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष का वर्ड का मतलब किसी को पता है क्या? What is प्रत्यक्ष? हाँ, प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने हो, जो आपके आंखों के सामने हो, आप जिसको छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, देख सकते हो, लाइक यू सीइंग कि क्या हो रहा है उसके साथ. प्रत्यक्ष. एंड प्रमाण मीन्स प्रूफ. इसका प्रमाण क्या है? पीपल से नो व्हाट इज द प्रमाण. सो प्रूफ. सो आपके सामने हो रहा है, वो देख के आप सीखते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण. इज दिस अ गुड वे टू लर्न? गुड वे टू लर्न. प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपके सामने हो रहा है. पीपल से नो व्हाट आई सी आई विल बिलीव. व्हाट आई सी आई विल बिलीव. इज दैट अ गुड वे टू लर्न? यस और नो? Yes. For example, in your chemistry labs, I don't know how many of you have chemistry yet. Science experiments. Who has done here? What can you tell me? Any science experiment that you did? Sorry, dancing daisies, raisins. Oh, what happens in that? I've never done this. The raisins go up and down. How? Sorry, with some reaction. Yeah, okay.
No worries. But the reasons go up and down, some reaction happens and they go up and down. Any other, Chaitanya, do you have any ideas? Any experiments you might have done? Germination experiment, how seeds go into saplings and things like that? No, no, just one line. हाँ हाँ and the chana के अंदर से there's just this one stalk that comes out and germinates. हाँ, germinates, the other one doesn't. हाँ, yeah, nothing in it. Yeah, nice. You any experiments which you did? Yeah. हाँ 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 उसमें देखा आपने कि उसमें जहाँ छोटे छोटे उसमें राउंड राउंड थिंग्स हैं या portions. A leaf is not just a leaf. There's like a whole city inside a leaf. Have you seen? Did you see that? Yeah, cool. No, you did any experiment yet? Yeah. Wow, testing for nutrients in food items. Ah, you both are studying the same books. Nice. Very nice. I did very simple. I don't know what these kids are doing. I've done very simple on the volcano and all of that. कि उसमें पानी में ही डालना हो volcano. I did something like that. Of course. But you saw that you found it cool, no? Yeah. So in all these experiments, क्या हो रहा है? You do something and you see something. Because of that seeing, you're taking out some inference and doing things. Is that okay to understand? So this is called pratyaksh praman when something is happening and in front of your eyes, in front of your senses, and उससे आप सीख रहे हैं. Good way to learn, no? Okay. There is another way to learn. It is called anuman praman. What is it called? Anuman, not Hanuman. What is called? Anuman. Anuman means guess. Yeah. An informed guess, not just any guess, but an informed guess. Is that okay? For example, I'll give you an example. अंदर अगर किचन से ठन 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 की आवाज आई अभी तो what will you think? हाँ, you will think what? अगर अंदर ठंडा ठंडा आवाज है तो क्या क्या सोचोगे आप कि बर्तन बज रहे हैं गिर गए हैं whatever. How do you know? आपको तो आप यहाँ बैठे हो कहीं और कुछ वही है आपको कैसे पता आप कैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि you are अंतर्यामी or something. You are like how do you know something that is happening which is not happening in front of your eyes? How do you know? By the sound, but देखा नहीं आपने क्या हुआ कंफर्म नहीं है कैसे आपको पता just a guess. What is it based on? What is the guess based on? From the sound. But if this is the first time you've been hearing बर्तन आपको पता ही नहीं जिंदगी में आपने बर्तन ना देखे ना सुने then what will you do? You won't know, no. Because your guess is based upon the fact कि आपने बर्तन देखे हैं बर्तन की आवाज आपने पहले सुनी है your previous experience के ऊपर आपका ये guess based है. Do you understand what I'm saying? Anuman praman. First was what? Pratyaksh, which is happening right in front of us. Second was Anuman praman, which is informed guess based on your previous experiences and your current perception. Is that okay? These are two ways to learn. Experiments भी इसी के इन्हीं की combination के ऊपर based है. Everything in this material world, in the material science, Hare Krishna, in this material science is based on this only. कि कुछ हो रहा है. For example, न्यूटन ने एप्पल को क्या करते हुए देखा? उड़ते हुए देखा? गिरते हुए देखा. And then न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देख के क्या सोचा? क्या सोचा उसने? There's a force that. There's a force that is attracting the apple from the tree to fall down to the earth. You know about this? You know where Newton is? Yeah.
Newton, have you heard the name Newton? Yeah, he came up with the concept of gravity. Yeah, he identified the force of gravity. So वो एप्पल गिरा तो उसने वो देखा, पहले तो प्रत्यक्ष देखा कि कुछ गिरा है, और उससे क्या किया, अनुमान लगाया कि किसने कुछ खींचा होगा, क्योंकि उसने सोचा कि बिना खींचे बिना पुश किए आज तक कुछ आगे पीछे नहीं हुआ है, so there must be some force which is attracting the apple down to earth. Is everybody with me here? Yeah, you're here with me. Hare Krishna. Good. So this is Pratyaksh Praman and Anuman Praman. But there's a problem. There's a problem. Both these things are dependent on our the perception of our. दोनों में क्या हमारे input elements क्या हैं? What are our input elements? प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारा इनपुट, लाइक वेयर आर वी टेकिंग इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम. अगर हमारे सामने कुछ हो रही है, हमें कैसे पता लग रही है उसके बारे में? Eyes, no. Our eyes, yes or no? Something is happening in front of me. My input device is what? My eyes, my ears, my nose. Something is happening. I'm touching it. Touch करके देख रहा हूँ. My skin. Senses. How many senses do we have? Five senses. Good. What are the five senses? Eyes, ears, tongue, nose, skin, touch. Is that okay? Five senses. These are our input devices. This is how we take in information from this whole world. You understand this? Yeah? You get it? Good. So हम कुछ, अगर हमें कुछ देखना है, जैसे खाना खाना खराब है कि नहीं, like some apple is there, some fruit is there, some mango is there. Who likes mangoes here? Like mangoes? Mango season is on, no? Hey, you don't like mangoes? What do you like? Which fruit you like? Banana you like? Oh, full. So your fruit is available all seasons. So if banana is there, now how do you know if banana is ripe or unripe, or it is gone bad or not? How do you get to know? पहले उसको देखते हो, है ना, कि क्या क्या देखना होता है उसमें? How do you get to know? Hey, you should know your favorite fruit. हाँ, ब्राउन, थोड़ा थोड़ा ब्राउन एंड येलो. ग्रीन है तो क्या है? ग्रीन है तो क्या है? अंडर है. अभी खाए, अभी नहीं खा सकते, इसका सब्जी बना सकते हैं, लेकिन अभी फ्रूट की तरह खा के सकते हैं, है ना. येलो है तो खा सकते हैं, बट पूरा कभी कभी येलो भी अनराइप होता है. यू सीन दिस? अनराइप होता है. कैसे? हार्ड हार्ड होता है ना, हार्ड हार्ड होता है. तो पहले तो देखा, देखने से कैसा लगा, क्या लगा? राइट लगा. लेकिन क्या फिर सेकेंडरी आपने टेस्ट किया, क्या किया, उसको टच किया, टच करके क्या देखा कि सॉफ्ट है कि हार्ड है. सो ये सारी सेंसेस को यूज करके आप पूरे वर्ल्ड को टेस्ट करते रहते हैं पूरे टाइम, ऑल द टाइम. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. ये जो अनुमान प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण इज डिपेंडेंट ऑन योर ओन senses, five senses. Yes or no? Yes. And your anuman praman is dependent on your previous experiences. कि पहले आपको ये पता है कि नहीं हुआ है. अगर आपको पहले से नहीं पता, जैसे वो बर्तन का एग्जांपल लिया कि बर्तन है नहीं है क्या है, तो यू विल नॉट नो ओनली कि क्या हो रहा है. यस और नो? योर माइंड विल इमेजिन थिंग्स कि कोई आ गया है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हैव यू एवर इमेजिन थिंग्स लाइक दिस, especially at night? At night, when you're alone at home, some sound comes. What do you think? What is your mind first think? चोर है. First thing चोर है. हाँ वॉश. या बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, डिपेंड है ना. तो ये दोनों डिपेंडेंट है. दोनों दोनों टाइप की जो चीजें हैं वो डिपेंडेंट है. एंड वो प्रॉब्लम है. क्यों? मैं बताता हूँ. क्योंकि हमारी सेंसेस क्या है? लिमिटेड है. हमारे सेंसेस अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? कैसे है लिमिटेड? हाउ आर दे लिमिटेड? हाउ आर द सेंसेस लिमिटेड? Oh, there are only five. That's also true. हमें और चाहिए थी. Can you think of more senses? Mostly there are five only.
in creation, if you see, mostly they're fine. भगवान ने जाति नहीं करी हमारे साथ, ह्यूमंस को दिया आपने fine, बट उसके अलावा ये 5 सेंसेस अपने में लिमिटेड है क्या? Yes. फॉर एग्जाम्पल इन ईगल इज देयर, ईगल का विजन और हमारे विजन में सुपीरियर विजन कौन सा है, किसका? ईगल विजन. Even if you go to, like, it's a term only कि he has a vision like a eagle, जिसका 20/20 मतलब बहुत सही eyesight होता है. क्यों? Eagle can see a small little mouse from it's flying up right and miles above the earth, and वो छोटा सा एक mouse अगर चल रहा है कहीं, it can see it. क्या vision है उसका? Yes or no? Other senses might be limited, but vision में हमसे वो better है. Yes or no? Yeah. वैसे डॉग का स्मेल हमसे बेटर है कि नहीं? यस और नो? या dog has better smells than any other animal or insect or something that has better senses than us. Rabbit, what does the rabbit do? हाँ, हियरिंग पावर. इवन डॉग का हियरिंग पावर हमारा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हम सुन नहीं सकते, राइट? बट वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी डॉग विसल देखा है? डॉग विसल अगर कोई बजाएगा, वी कांट हियर दैट, but the dogs will come running if you do that. You understand what I'm saying? Our senses are, हाँ, जैसा इंस्टिंक्ट उनका बहुत अच्छा होता है. 6th सेंस बोलते हैं इसको. 5 सेंसेस तो है बट उसका 6th सेंस भी बहुत अच्छा है, राइट? सो ऑल दिस इज देयर, बट इवन आवरसेल्व्स, अगर यहाँ पे रात हो गई है और लाइट चली जाए, हमें दिखेगा क्या? दिखेगा क्या? क्यों क्यों नहीं दिखेगा हमको? आंखें तो अभी भी है हमारी. Yeah, our eyesight is dependent on what? That there is needs to be presence of light. Bats don't have to do this. Bats can see at night. How? Night vision नहीं, sonar they send, वो अपने कानों से देखते हैं. Yeah, they're blind. Actually, bats are blind, almost blind, but they can fly so fast. Have you seen bats fly? They come so near to you and then they just move around like this. How are they doing that? They're blind. Because they keep sending sonar waves, and once it hits back, it does a calculation in its head. Have you heard this physics? I don't know. आपने साइंस में क्या होगी? जब थंडर आता है, थंडर लाइटनिंग पहले आता है, थंडर पहले आता है? लाइटनिंग पहले आता है, थंडर पहले आता है? लाइटनिंग पहले आता है. यू सीन लाइटनिंग? एवरीवन सीन लाइटनिंग? लाइटनिंग पहले आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? थंडर. क्यों? स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन, हाँ, probably टॉपर इन दिस स्कूल. तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके the bat is moving around the whole world, making a whole map in its head just by sound. Yeah, our senses are limited. Yeah, so even our touch is limited. For example, आप आंखें बंद कर लो. पहले मैं नहीं, सॉरी, आंखें बंद करो तो मेरी देख नहीं पाओगे मैं क्या बताना चाहता हूँ. मैं पहले बता देता हूँ आपको. अगर अपने हैंड्स को आप ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है? अब ऐसे कर लिया ना, कोई भी चीज को अगर आप अपने वॉच को, अपने टेबल को, किसी को भी, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ना, यहाँ पे आंख बंद करके उसको टच करके देखना. ऐसे ऐसे टच करना. आंख बंद करो और उसके बीच में टच करो. सिर्फ ओनली बीच में टच होना चाहिए, और कहीं नहीं, सिर्फ बीच में टच होना चाहिए. सिर्फ बीच में टच होना चाहिए. The edge, use the edge bro. You can use the edge of the table. हाँ, like that. So if you close your eyes and do this, no, I don't know if you're doing it कैसे, but what I'm trying to say is, ऐसा लगेगा आप दो चीज टच कर रहे हो, एक चीज नहीं, दो चीज टच कर रहे हो. ऐसा फील हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत. अभी मैंने पूरा बता दिया, नहीं तो usually this experiment goes well, and if you touch this like this in the middle, yeah, it feels like you're touching two things. It's your own touch that is giving you an illusion that you're touching two things, right? Pretty cool, no?
Your own senses are getting illusion right in front of you. आंखों के सामने mirage. Have you seen a mirage? You know what a mirage is? Or an optical illusion. कभी आपको दिखता है, for example, the sun and the moon. Which one is bigger? Sun is bigger. But which one looks bigger? Moon looks bigger. अगर मून कभी कभी नीचे होता है तो बड़ा दिखता है कि नहीं दिखता है? But which one is bigger? And which one is closer? But देखने से पता लगता है? We can't get to know, right? Because our eyes are limited. Can't get to know. वैसे ही हमारा ईयर है, ears है, आंखें हैं, स्किन है, टच है, टेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत टेस्टी, बहुत स्वीट रसगुल्ला खा लिया. और हैव यू हैड अ मिंट? मिंट खाया आपने कभी? पोलो? यू नेवर हैड अ मिंट? यू हैड अ मिंट? ओहो, आई टॉक टू यू 10 years later when you had a mint. So मिंट खाने के बाद अगर आप नॉर्मल पानी पियो, कैसा लगता है आपको? ठंडा सा लगता है ना पानी मिंट खाने के बाद. बट एक्चुअली पानी ठंडा है क्या? नहीं है ना. हाउ इज इट ठंडा? आपका सेंस आपको उधर इधर थोड़ा भटका रहा है. सो आवर सेंसेस are limited. Hence, pratyaksha praman, because it is totally dependent on our senses, can be flawed sometimes. Yes or no? Pratyaksha praman is a good way to learn, जो आपके सामने हो रहा है वो देख के, but it is not perfect. Do you agree here? लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. अनुमान प्रमाण पे आते हैं. अगेन इट इज ऑल्सो लिमिटेड बिकॉज वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर परसेप्शन, कि आपके पहले का एक्सपीरियंस था कि नहीं था. अनुमान प्रमाण, फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने फॉर सो मेनी इयर्स, बिग साइंटिस्ट, द बिगेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि दिस अर्थ इज फ्लैट. आई एम नॉट किडिंग, ही इज गेटिंग टू नो दिस टुडे. ही इज लाइक लाफिंग एट द साइंटिस्ट. बट I'm not kidding. Scientists, just some centuries ago, people, actual leaders of science thought this Earth was flat. And even like for the like what 2000 years ago, people thought that the Earth was at the center. That sun is revolving around the Earth and not the Earth revolving around the heliocentric and geocentric. It is called. Yeah, many things like this. People just thought like that. How? Because अनुमान लगाया. But वो अनुमान फिर क्या हुआ? They had to correct themselves. Do you understand what I'm saying? So अनुमान प्रमाण and प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों are good ways to learn, valid ways to learn, but they're not perfect ways to learn. There can be fallacies in it. उसमें defects हो सकते हैं. Do you agree here? Yeah? तो हम क्या करें? Perfect way to learn क्या हो सकता है? I want to ask you, perfect way to learn क्या हो सकता है? ये दोनों तो imperfect हो गई, तो perfect way क्या होगा? What is the perfect way to learn? A combination of both. Still, senses भी limited है. It's a combination of two imperfect things. Based on, you should learn from somewhere else, some person like you. Yeah. A person who already knows something perfectly can teach us perfect knowledge. It is called the third kind of praman, which is called Shabda praman. It is called Shabd means वैसे word है, but here it means sound. It means sound. So number one way was Pratyaksh praman. Second was Anuman praman. Third way is Shabda praman. Shabda praman is very like especially material world में आप अनुमान और प्रत्यक्ष definitely use कर सकते हैं और हम करते भी हैं. That's how we learn, because everybody is guessing, we are also guessing. Everybody is experimenting, seeing and learning, we are also learning. But in spirituality, no. Spiritual science हम इससे कर नहीं सकते, because spirit दिखती है क्या आपको? Can you see spirit? Can you see spirit? At least with our material eyes, can you see spirit? Something is spirit. How can you see it with something made out of matter?
Our eyes मैटर से बनी है कि स्पिरिट से बनी है? मैटर से बनी है. Yes, do you agree here? तो अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं इस हवा में, यस और नो? घूम रहे कि नहीं घूम रहे? क्या दिख रहे हैं हमको? कैन वी सी दैम? इस घर में वाईफाई है क्या? ये देखो यहाँ पे ये चल रहा है, दिस वी हैव कनेक्शन यहाँ. इस घर में वाईफाई है? यस, दैट मींस द वाईफाई रेज आर गोइंग ऑल अराउंड दिस प्लेस, यस और नो? कैन यू सी दैम? Right? So you need specific instruments to see these, either the bacteria or the rays, yes or no? Just like that, our soul is on a different dimension. Spirit is on a different dimension, made out of something else. So eyes made out of matter cannot perceive something which is made out of spirit. Do you agree here? Does this make sense? Yeah. So अनुमान प्रमाण, सॉरी, प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं चल सकता स्पिरिचुअल साइंस लर्न करने में. क्या अनुमान प्रमाण चल सकता है? अनुमान प्रमाण चलाने के लिए यू नीड प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट. व्हाट प्रीवियस एक्सपीरियंस डू वी हैव ऑफ द स्पिरिट? वी आर स्पिरिट आवरसेल्व्स, बट हमारे पास उसके नॉलेज का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं. यस और नो? डू यू एग्री हियर? So both of them can't work. Material world के लिए they work to a certain extent, and hence we keep updating. आप अपनी बुक्स देखोगे तो there are multiple editions. So अब आज तक का हमें जो पता है वो हम सबको सिखाते हैं. बट उसके बाद अगर कुछ चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल when I was a kid, I was told that electrons, if they move in left direction, then the current moves in right direction. Opposite direction of electrons. This is what I was taught. Yes, ma'am. So you know, spirits, it's not related to what we're talking about. Can I ask you? Yes. Uh, A ghost, you're real. Oh, should I talk about this? I don't know if I should talk about this. Maybe we can take this up after the session. Yeah. Okay. But we'll talk about this for sure in one of our sessions. Yeah. Today also I'll talk to you about this. But we have a session particularly about this. We'll talk about it. What was I talking about? Electrons. That electrons अगर एक direction में move करें, I was taught when I was in school that current is moving in the opposite direction, right? But they got to know कि ऐसा होता ही नहीं है. They got to know that current, अभी भी आज की भी books में I don't know what's being taught, but in reality they now have understood that electrons जिस direction में जा रहे हैं, current भी उसी direction में जा रहा है. Then they got it updated again कि actually electrons don't move like this. It moves like honey. Have you seen honey move? If you pour honey is how thick or thin? Thick, no, viscous. So electrons are like that, very viscous. They move like that, and current moves along. But because it is very hard to explain, especially at the school level, they haven't changed it. They're like, नहीं अभी के लिए इसको रहने दो. आगे जाके, you know, when you go to college, when you go to do PhD and everything, they say you forget everything that you have learned before. We will teach you the unlearn. You whatever you've learned, you unlearn that, and then you learn things again. That's how learning works. Because ये प्रत्यक्ष और अनुमान पे based है. So that's why you need. This is how the world works. But in spirituality, this can't be how it works. This is the last point for the day. In spirituality, because you need to have perfect knowledge, nobody has an experience, can't be perceived by the senses. We have to learn spirituality not through our senses, not through our perceptions, not through our own mind. I'm guessing things. We have to learn it through the third praman, which is called Shabda Praman. Shabda Praman basically means, for example, I'm a kid. Okay? Assume I'm a kid. Okay? I do not, for the first time, मैं आज ये पंखे को देख. I don't know पंखे का concept ही नहीं पता मुझे. I don't know what a पंखा is. Okay? Assume that I'm a kid who doesn't know what a पंखा is. I come and ask, I see this पंखा, and अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लगेगा क्या है, पता नहीं क्या है, तीन इसमें ऐसे हैं, चमचा है, क्या है. I'm guessing. I can guess a lot of things, but most of those things will be wrong. I'm a kid, no, I have very limited experience. Then I ask my father or my mother or whoever it is at home, कि मम्मी पापा
What does this thing do? What is that? They tell me that beta, if you switch it on, if you feel गर्मी, then if you switch it on, what it does is ये आपको क्या देगा? हवा देगा और आपको गर्मी से बचाएगा. Is this perfect knowledge? Perfect knowledge? किससे मिला मुझे? जिसको ये पंखे के बारे में पता है. मैंने उसको एज इज एक्सेप्ट किया, देखा हाँ चल रहा है, सही चल रहा है. एंड देन आगे जाके मैं स्कूल गया. स्कूल में जाके बाकी बच्चे थे, उनको भी नहीं पता पंखा क्या है. मैं भी बच्चा था, मुझे नहीं पता था, उनको भी नहीं पता. लेकिन me being a बच्चा, if I pass on the same information as is without adding any mirch masala in it, without saying that there's a dragon inside the temple, the pankha जो ऐसे ऐसे चला रहा है, without adding my own information, if I pass on the same information as my mother or father gave me about the pankha to the other kids, is that perfect knowledge? Is that perfect knowledge? Yes. Yes or no? Yeah. That is what this Shabda Praman basically is. I may be a kid. Me, myself, am not perfect. But because I've accepted perfect knowledge and have perfectly propagated it forward, that makes my word perfect. Myself am not perfect. मैं तो बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं पता. लेकिन बिकॉज मैंने परफेक्ट सोर्स से परफेक्ट नॉलेज ली और आगे उसको परफेक्टली बढ़ाई, दैट मेक्स द नॉलेज perfect. Is this okay? That is what the Guru Parampara means. Hence, जो spirituality है, वो हम गुरु परंपरा से लेते हैं, because originally speaking, it is coming from God or the Creator Himself. ये पूरे वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिट के बारे में कौन परफेक्टली जान सकता है? कौन जान सकता है? क्रिएटर, जिसने बनाया हो, उसको तो परफेक्टली पता होगा ना. यस और नो? डू यू अग्री हियर? उनसे सीख के आगे बढ़ाई बात और उसको परफेक्टली आगे बढ़ाई विदाउट एडिंग एनी मिर्च मसाला इन इट. दैट इज अ पर्सन हु इज अ गुरु. गुरु का बेसिक डेफिनेशन ये है, learn it from a person who is perfect and pass it on perfectly without adding any interpretation contortions in between. That is a guru, and that is called Shabda Praman. Spirituality Shabda Praman से ही सीखी जा सकती है. Yes, उसमें faith जो है build experience से होता है. Blind faith नहीं करना है हमको. Faith हमारा experience से बढ़ता है. But this is how you acquire spiritual knowledge. Hence, we take it from scriptures. For example, Bhagavad Gita is there. What is it called? अगर if you can read the title. Bhagavad Gita as it is. Yeah, Bhagavad Gita, but not my Bhagavad Gita, not your Bhagavad Gita, not Bhagavad Gita according to me. No, Bhagavad Gita as it is. Hence, we learned it from that because Krishna is speaking. 5,000 years ago, he is speaking to whom? Arjun. Same thing as it is being passed on to us, and we are trying to pass it on to others. That is why it is called perfect knowledge about spiritual science by Shabda Praman. उसके बाद जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तब उसका एक्सपीरियंस होगा, तब हमें उसमें फेथ बढ़ता जाएगा. इनिशियल फेथ थोड़ा सा रखें कि नहीं, आई एम गोना टेक इट एंड ट्राई इट. ट्राई करने के बाद हमें जब उसका रिजल्ट मिलेगा, हमारा फेथ उस पर बढ़ता जाएगा. Is this okay? I'm going to stop here and I'm going to take any questions if there are. But these are the ways to learn in this world. There are ways to learn about material science, but in spiritual science, there's a particular way to learn, which is called Shabda. Okay. Any questions do we have? Yeah. Same question. Any other question today related to today's session? I think not a question, but generally, like the biggest challenge with Shabd Brahman is how do you ascertain that the information has been passed perfectly? Perfect. You read different versions of Bhagavad Gita. Different. They have their own interpretation. Yeah. आपको कैसे पता लगे कि कौन सा इंटरप्रिटेशन है और कौन सा एज इट इज है? Just Bhagavad Gita has written. So it has changed my own concept.
So they will say, no, there is only one God. Okay, there is nothing like Rama. Yeah. There is nothing like Shiva. There is nothing Rama. Only one God. Yeah. And even Vishnu is near to Krishna is, but Krishna is a kind of avatar of Krishna, Yeah. right? So वो it's a kind of self. हाँ, पूरा खिचड़ी पक जाता है दिमाग में, पूरा खिचड़ी पक जाता है ना, कि क्या है क्या नहीं है, पता ही नहीं लगता. Yeah, but I must. I think I mentioned it last time also. I'm a student of science. I love science. I really like logic. I'm a South Indian by birth. तो हमारे घर में ये गीता का पाठ, ये वो पार्ट ऑफ लाइफ था, चलता था. तो मैंने 10th क्लास तक उसको, पेरेंट्स, आई यूज्ड टू डू इट. 10th क्लास के बाद एज यू ग्रो अप, यू नो ट्राई अपना लाइफ जीते हुए ये छूट जाता है पीछे. But when I got into, started reading in a structured way, especially coming to Bhakti Yoga, especially coming under the tutelage of Srila Prabhupada, his writings, I got to know the logic behind everything, and everything reconciled. Instead of it becoming a khichdi for me, it started making sense. For example, you mentioned Ram, Shiva, Krishna, Vishnu. I know for sure कि ये मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, बिकॉज ही मेड इट सो क्लियर फॉर मी कि इन सब का रोल क्या है, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इन सब का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो वो पूरा रिकनसाइल हो गया. मुझे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लगा ही नहीं कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है. It's a reconciliation for me. So I'm like, oh, this makes total sense, right? That's what really attracted me, because सबका मुझे logic पीछे दिखा. But your question, coming back to your question, कि कैसे पता लगे कि कौन एक्चुअली में सही सी चीज दे रहा है और कौन सही चीज नहीं दे रहा है. बिकॉज बाहर तो सर्कस है. Bahar, you have a full shopping mall of philosophies and ideas available according to our whims and fancies. Yeah. How do you get to know? There are some basic checks and balances that you can do. Uske baad, obviously, there's detail. But can I tell you the basic checks and balances for today to start with? Yeah. जैसे कोई स्कूल, आपने अपने बच्चों को स्कूल में डाला होगा. All of you must have gone to school or whatever, home school, different places. So, क्या सोच के डाला उस स्कूल में आप? What were the biggest considerations before choosing a school or college? For yourself, college भी choose किया होगा, तो क्या choose? What are the considerations? Quality of education. Quality, but how will you know the quality? Reputation. Sorry, Reputation. reputation. Good Yeah. teacher. Good teacher. It's better like you are going to a hospital, like you don't go for the hospital, you go for the doctor. Doctor, हाँ, yeah. Word of mouth. Word of mouth. But एक main चीज आपने Like checking, getting the review. रिव्यूज, एक मेन चीज चेक किया होगा, लेकिन आपने accreditation है कि नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है भैया. रिकॉग्निशन ही नहीं है तो मैं पूरे 12 साल पढ़ लूंगा, 4 साल पढ़ लूंगा, डिग्री ले लूंगा, क्या करूंगा उसका? Not recognized by UGC, not recognized by AICTE, not recognized by NCRT. What will I do? No board. Board कौन सा है? Recognized है कि नहीं है? Basic, सबसे basic चीज ये है. Yes or no? Yeah. So there are called 4 Vaishnava Sampradayas that are there, which from which many branches come. So first basic check is कि जिससे आप नॉलेज ले रहे हैं, क्या वो अक्रेडिटेड है कि नहीं है, क्या किसी संप्रदाय से है कि नहीं है. संप्रदाय मीन्स lineage, because we are saying it has to come from God, so obviously there has to be a lineage. Otherwise this person is basically giving his own anuman and his own pratyaksha, not shabda. So सबसे पहला वो देखना है, चेक करना है. सेकंड कि lineage में ही कि इस पर्सन का कोई गुरु है कि नहीं है. इस पर्सन का जो आपको दे रहा है कोई, उसका कोई गुरु है कि नहीं है, उसने कहां से सीखा. इफ दैट पर्सन इज सेइंग दैट ये मैंने अपने आप सीखा, हाँ, रेड फ्लैग. अपने आप, हमने अभी भी बोला कि स्पिरिचुअल साइंस अपने आप कोई सीख ही नहीं सकता. Still there is sadhana gyan, right? Yeah. Do meditation. Sometimes they get connected to God. Yeah. Like, even these days you can find these kind many people Yeah. claim that we have a spiritual experience. Yeah. kind of other thing.
Yeah. What? Those kind of things. I don't know what to say. Scriptures say they're fake. Scriptures say this very clearly. Because even there, I mean, even scientists have, doctors have done some experiments. Yeah. They've been able to Yeah. mind. Correct. Yeah, that happens. For example, artists के साथ होता है. कोल्ट, कोल्ट जिसने गन बनाई थी. तो कोल्ट को ना रात को दिमाग वो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग, ओके, बट सोया उठा और उसके दिमाग में और एक इंस्पिरेशन था. आर्टिस्ट हैव दिस इंस्पिरेशन. ये इंस्पिरेशन कैन कम, बट ये गन बनाई है उन्होंने, ये न्यूक्लियर वेपन बनाया है, ये आर्ट बनाया है. What does it have to do with spirit? Does it have something to do with spirit, or is it matter? It's matter. Matter के बारे में you can get all inspiration possible. Even, for example, for spirit also, spiritual science also, you can get inspiration to what to do, where to start. But to perfect it, you need a person to give it to you. And inspiration can definitely come about matter and spirit. But after that, you need to pursue that inspiration to do. Material inspiration को भी अगर कोल्ड को इंस्पिरेशन आई और उसने छोड़ दी, हाँ मुझे आया था, बट मैंने उसके बारे में कुछ किया नहीं, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा. हम सबके पास भी आइडियाज बहुत आते हैं, बट डू वी एक्ट ऑन देम? Most of us have many good ideas, we don't even write them down. We lose so many ideas just like that. Yes or no? People who are actually acting on them are doing something in life, right? बट या स्पिरिचुअलिटी में आप मेडिटेट करते हो, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली आती है, क्योंकि आपने मन को क्या कर लिया है, मेडिटेशन से शांत कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लेक, आपका उसमें चेन गिर गया. लेक है, मडी लेक है, उसमें क्या गिर गया? आपका चेन गिर गया. अब आप तिलमिला जाते हो, you get really agitated, you go into the lake, you start looking for it. It's a very muddy lake. What happens to all the mud in the lake? What happens to all the mud in the lake? It gets agitated, no? All the mud comes up. The whole water, the whole pond becomes very muddy. Can you see the chain where it is? You can't see it, no? What do you have to do? You have to get out and you have to wait for the mud to settle down. Once it settles down, can you see the chain where it is? You have more probability of seeing the chain, yes or no? Yeah. So just like that, meditation, especially when we think of it, it is called Dhyan Yoga. Krishna talks about it in the 6th chapter of the Gita. He talks about Yam, Niyam, Ashtang, basically Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and then Samadhi. Right? ये सारे ways है माइंड को क्या करने के लिए, काम करने के लिए. माइंड काम होगा ना, तब हमें दिखेगा कि अंदर क्या है. तब तक मर्ड है अंदर. We will get to know that, oh, I am a spirit soul, and with me is sitting Paramatma also, God also. Now that is inspiration. When you get to meditate, you get to see this. But then you have to act on it. Ki, who am I? What am I? You have to pursue that path. To pursue that path, you need a teacher, you need a guide. That you can't do yourself. Is that okay to understand? Yeah? We have Atma and Paramatma. Yes. So one, Atma is us, which is soul. ठीक है, me, I'm a soul. ठीक है, I'm not this body. I'm a soul. Whatever, if I'm doing something, it's doing soul or body. The soul is doing it through the body. Your soul, this body is a machine that you've got. Software. You're the power. You're the person who is powering this whole thing. हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है. सोल सॉफ्टवेयर भी नहीं है. Our mind is the software. You understand? That is actually this whole session is actually scope से बाहर है, but this is the first thing that Krishna talks about in the 2nd chapter of the Gita. So what is mind? What is body? Mind, अगर मैं आपको बताऊं, का definition that Krishna gives is that it's a constant flow of thoughts. All of us have a mind. Who has a mind here? You have a mind?
You have a mind. Everybody has a mind. Where is it? Where is your eyes? Eyes कहाँ है आपकी? यहाँ है. Nose यहाँ है. कान कहाँ है? यहाँ. Mind कहाँ है? Tell me where the mind is. Ah, people either do this or they do this. Nobody does this. घुटने में मेरा mind. Nobody does that. Why? But this is your brain and this is your heart. Both of them are physical organs, not the mind. Where is the mind? You say you have the mind, but you don't know where it is. Arey, where is it? You can't touch it. This we have two bodies, two layers. जूता पहनते हो जूता? जूता पहनने से पहले क्या पहनते हो? सॉक्स पहनते हो? तो वैसे ही हम सोल हैं. हमारे पर दो लेयर्स हैं, एक सॉक का और एक जूते का. ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जूता है, लेकिन इसके अंदर क्या है? सॉक्स है. और सॉक्स के अंदर कौन बैठा है? मैं हूं. मेरे ऊपर सॉक्स है, मेरे सॉक्स के ऊपर जूता है. इट इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी. ग्रॉस बॉडी हमें दिखता है, आई कैन टच इट, फील इट, एवरीथिंग, राइट? बट द माइंड एंड इंटेलिजेंस वी कांट टच. मन बुद्धि इसको बोलते हैं. मन बुद्धि अहंकार इसको बोलते हैं. माइंड इंटेलिजेंस ईगो, these are called subtle body. We can't touch it, feel it, but we can perceive it. We know we have thoughts, hence we know we have mind. Is that okay to understand? Why were we talking about this? Atma and Paramatma. I am Atma. I have a mind, I have a body. I have a mind and I have a, but I am not the body, I am not the mind. I am a who? I am a soul. This is a spiritual science. We know many things about this body. हर इस बॉडी के हर पार्ट का एक डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस में. यस और नो? एक एक डॉक्टर है. उंगली के लिए एक डॉक्टर है, गले के लिए एक डॉक्टर है, कान के लिए एक डॉक्टर है. ठीक है. इस बॉडी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है. अब माइंड के बारे में भी हमें पता है. देयर इज अ साइंस फॉर दैट, साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री एंड ऑल ऑफ दैट. बट बॉडी से कम पता है कि ज्यादा पता है? थोड़ा कम पता है ना. अभी नया है, लिटिल एक्सप्लोरिंग. यस और नो? थोड़ा कम पता है. अब उसके अंदर भी क्या है? बिलो दैट इज व्हाट? सोल. सोल के बारे में क्या पता है भैया? मुझे एक डिपार्टमेंट दिखा दो इन एनी कॉलेज, एनीथिंग जो सोल के बारे में. माइंड के बारे में डिपार्टमेंट्स है, बॉडी के बारे में डिपार्टमेंट्स है, सोल के बारे में डिपार्टमेंट है नहीं है. दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू गो टू द भगवद गीता फॉर दैट. सोल है, हमें पता है. यू नो हाउ वी गेट टू नो सोल है? Our body is there. When someone dies, the body goes or the body stays? Body stays. People are crying. अरे चला गया, मर गया, खत्म हो गया. कहाँ चला गया? Right here, the body is right here. Who? क्या चला गया फिर? सोल चली गई. So we are the soul. हमारे साथ लेके each one of us has परमात्मा और भक्त. God in the form of Paramatma, our personalized God sitting in our hearts, in all of our hearts. इसलिए हम बोलते हैं कि हर एक में क्या है? भगवान है. लेकिन हर एक भगवान नहीं है. दैट इज द कंफ्यूजन. सबके अंदर भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है. सोल भी बैठा है और साथ में कौन बैठा है? भगवान, परमात्मा बैठे हैं एज अ कस्टोडियन. That I'm going to sit with you. I'm going to sit with you. I'm going to be a witness of what you're doing. Each thing of whatever you're doing, I'm going to be witness. And whatever you want to do, I will be sanctioning that. मैं उसको yes और no बोलूंगा. इसलिए बोलते हैं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी किसके बिना नहीं हिल सकता? भगवान के सैंक्शन के बिना हिल नहीं सकता. All these are topics that we cover in the Gita. Actually, I'm going ahead of myself. But does it give you a little bit of an understanding? Yeah. Is there a question there? No, no. Arjun just. Achha, okay. So can I stop there for today? Yeah. Is it interesting? Bhagavad Gita is amazingly interesting. It tells us things that we've seen in the world. We never questioned it. But Arjun is asking the questions on behalf of us. He's asking the questions we've never bothered to ask. And then we're like, oh yeah, ये question अच्छा है, अच्छा question है. Have you seen class में हम चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन कोई और student बोलता है, मैं sir, I have a question. And I also have that question. Just like that, Arjun's asking the question on behalf of us, and Krishna's answering. So I'm going to stop there. Thank you so much for giving us your weekends.
Saturday mornings. Thank you so much for coming. We'll meet you next week. Hare Krishna.